Welcome to Himani Coaching Center. We are committed to simplify concepts and amplify confidence of all the students who are watching our videos to learn maths, physics and chemistry. Students, आज हम कर रहे हैं CBSE क्लास 10th की एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल्स पे. ओके, सो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर. सो एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो है the graphs of y equals px are given below. For some polynomial px, find the number of zeros of px in each case. px मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है हमें. This px is a function जिसका ग्राफ यहाँ पे है. So अगर हमको ये मालूम करना है कि कहाँ कितने जीरोस हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और लेट अस से मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है. तो जहां जहां पे भी ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, दोज आर अवर जीरो. सो कहाँ कहाँ कट कर रहा है. एक इधर, लेट अस नेम इट एज a, एक इधर b और एक इधर c. सो तीन जगह इसने किया. तो जो मैंने रेड वाला ग्राफ बनाया, यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ इसके 3 जीरो हैं. ठीक है. हमने देखिए इस वाले को कंसीडर नहीं किया. क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस को कट कर रहा है. तो जब हमें आंसर करना है, तो हमें आंसर करना है, जब भी हमसे पूछा जाए कि कितने जीरोस हैं, तो हमें बताना है कि भाई कहाँ कहाँ पे ग्राफ is intersecting x axis. Okay, it can touch also, that also is considered a zero. So now let us look at figure number 1. अब आप देखिए क्या ये कहीं पे भी x axis को टच कर रहा है. नहीं. तो कितने जीरोस हैं इसके? नथिंग. सो जीरो इज द आंसर. इस पर्टिकुलर ग्राफ में कहाँ पे x एक्सिस को कर रहा है? एक जगह. सो हाउ मेनी जीरोस? 1 0. अब आते हैं हम इस ग्राफ में. यहाँ पे एक यहाँ पे कट करा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे. सो इधर 3 जीरोस हैं. ठीक है. अब इस ग्राफ में देखते हैं, एक जीरो यहाँ पे, एक यहाँ पे. सो यहाँ 2 जीरोस हैं. अब इस वाले में चलते हैं. 1 2 3 4. सो इस पर्टिकुलर कर्व के 4 जीरोस हैं. यहाँ देखते हैं 1 2 3. सो इधर इसके 3 जीरोस हैं. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हमने क्या किया, ग्राफ के द्वारा हमने वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी जीरोस अ पॉलिनोमियल कैन हैव. ओके. अब जो हम बात करेंगे इस चैप्टर में, वो बेसिकली है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है. मोस्टली हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2. ओके. सो अगर मुझे इफ आई वांट टू राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट वुड बी समथिंग लाइक ax square plus bx plus c. Now where a, b and c are integers. Okay. What is the condition for a polynomial to be quadratic? That the coefficient of the x, the highest power should be square. Okay. Now coefficient of x square here is a, coefficient of x is b and constant is c. ये हमको ध्यान रखना है when we do some questions. Okay. Now let us quickly understand this polynomial thing. अगर आपके पास में if we have got a polynomial where coefficient of x square is positive, okay, so then the shape will be a parabola which is opening up. So we call this as concave upwards. Okay. ये पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है. सपोज कीजिए हमारे पास there is a polynomial like minus ax square plus bx plus c. Coefficient of x square is minus. In that case, the polynomial would be, the graph would be a parabola which is concave downwards. Okay. So ये आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट रहेगा. अगर आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस है और नीचे कोई ग्राफ दिए होंगे 3 4, तो आपने कौन सा चूज करना है? जो कॉनकेव अपवर्ड्स है. और अगर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है, तो हम कौन सा चूज करेंगे? जिसमें कॉनकेव डाउनवर्ड्स है. ठीक है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड that how to find zeros of a polynomial. So you will have done middle term splitting for quadratic polynomials in class 9th.
So let us quickly understand. Let us say I want to do x square plus 5x plus 6. Okay, this is a quadratic polynomial and we want to find its zero. So to find its zero हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा. How will we do middle term splitting? So पहले हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट. वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x square टाइम्स कांस्टेंट, so which is 1 into 6 and we get a 6. Sum is coefficient of x, which is 5. So now what should we do? We have to find factors of 6 so that product is 6 and sum is 5. Okay. So the best way is, you can just do 2 3s are 6. So you are getting this. So we are getting factors of 6 as there is 6 and 1, then 2 and 3. Now 6 and 1 अगर आप करोगे तो 6 minus 1 will give me 5, but 6 into minus 1 will give us minus 6, but I need a plus 6, so we will reject this. Now 2 plus 3 is 5 and 2 into 3 is 6, so this is the right combination. So what will we do now? अब हम 5x को split कर देंगे as 2x and 3x. So we will write x square plus 2x plus 3x plus 6. And then we regroup. यहाँ पे हम grouping करेंगे and factorize. So let's factorize. So you take x common. So when we take x common, what are we doing? Inside we are dividing each quantity by x. Okay, this is what we do in our mind. So I am just showing it. In this 3 is common, so you take 3 common. So 3x is getting divided by 3 and 6 is also getting divided by 3. Now what will happen? This x will knock one power off. So 2 minus 1 is 1. This x will knock x. This 3 will knock 3. This 3 is into 2. So what are we getting? We are getting x into x plus 2 plus 3 into x plus 2. Now x plus 2 common hai. So x plus 2 into x plus 3. Now our job is to find zeros. So zeros का मतलब क्या होता है भाई, पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो जीरो से. Now, if x plus 2 into x plus 3 is 0, then as per zero product rule, either x plus 2 is 0 or x plus 3 is equal to 0. So we will get x equals minus 2 or x equals minus 3. Okay. So what have we done in this question? We have found the zeros of the polynomial. Okay. Now, before I get into the exercise 2.2, this question, with the help of this question, we will understand the concept of coefficients. Okay. Now, let us write the polynomial again, which is x square plus 5x plus 6. This x equals minus 2 and minus 3. They are called minus 2 and minus 3 are zeros or roots of the polynomial. So I am writing fx. Fx means polynomial. आप px भी लिख सकते हैं, means the same. इसका मतलब क्या है? अगर आप x को -2 से रिप्लेस करेंगे, so x square plus 5x plus 6 will become 0. करके देखते हैं. So -2 square plus 5 into -2 plus 6. -2 square is 4. 5 into -2 is -10. Plus 6, 6 plus 4, 10, minus 10, 0. Similarly, if you put x as -3, you will get a 0. That is why we call these as zeros of the polynomial. Okay. Now, there is another method where we compare the polynomial with ax square plus bx plus c. ये एक हमारा standard polynomial है. इसमें we will find the coefficients from the polynomial. So a जो x square का coefficient है, in this question it is 1. b जो x का coefficient है is 5 and c is 6. Okay बच्चों. So this is what are we doing? We are comparing x square plus 5x plus c 6 with ax square plus bx plus c. We are finding a is 1, b is 5 and c is 6. Now according to the rules of coefficient, sum of roots equals minus b by a and product of roots equals c by a. Okay. Now, if I want to find sum of roots for
x square plus 5x plus 6. So b is 5, a is 1, so it should be minus 5 by 1, which is minus 5. Similarly, if I want to find product of roots, so c by a, which is 6 by 1, which is 6. Now let us verify. So what have we done? यहाँ हमने coefficient से sum and product find किया. अब हम zeros जो हमें मिले हैं जो middle term splitting से, so अब हम इनका sum find करेंगे. So sum would be what? Minus 2 plus minus 3, which is minus 2 minus 3 minus 5. So you will find the sum of zeros and sum with the help of coefficients is equal. Now let us find product. So product is minus 2 into minus 3, minus into minus is a plus, 2 3 is a 6. You will find products are also same. So this is how we find the zeros of a polynomial and then verify with the help of coefficients. Okay, this is one of the question which you always get in your exam. Okay, now there is, when we write these zeros, so there is a rule that we write them as alpha and beta. Okay, so you can take alpha as minus 2, beta as minus 3, or alpha as minus 3, beta as minus 2. That really does not matter. Answer would be same. So when I do sum of roots, so I'm actually doing alpha plus beta. Product of roots is alpha beta. So एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है. Now with this, students, let us go to exercise 2.2. Okay. So let us look at exercise 2.2. What is the first question? So first question says, find the zeros of the following quadratic polynomial. Verify the relationship between the zeros and the coefficients. और जो पहला हमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वेयर minus 2x minus 8. So in order to do middle term splitting, हमको product चाहिए. Product is 1 into minus 8, which is minus 8. Sum is coefficient of x, which is minus 2. So factors of 8, जिनका product minus 8 हो and sum should be minus 2. So आप देखिए factors अगर करना चाहें तो आप 8 को ऐसे कर दीजिए 2 times 4 and then so this is the factors of 8. इसी में से हमें हमारा आंसर मिलेगा. सो पहला ही देख लीजिए 2 and 4. कैन दे गिव अस minus 2? यस. हाउ? अगर मैं 4 को माइनस कर दूं और 2 को प्लस कर दूं, सो आई विल गेट सम एज minus 2 and minus 4 into 2 product would be minus 8. So this is the right combination. So अब हम क्या करेंगे? We are going to use this and solve. So let us find the zeros. So I will write x square minus 4x plus 2x minus 8. Take x common from these two. So x square divided by x is x. Minus 4x divided by x is minus 4. Then यहाँ पे 2 common है. So 2x divided by 2 is x. Minus 8 divided by 2 is minus 4. So what will happen? X minus 4 common times x plus 2. Now we are finding zeros. So what will that mean? That we will have to equate this to 0. So that means either x minus 4 is 0 or x plus 2 is 0. So x is equal to 4 or x is equal to minus 2. So what have we done? We have found the zeros. Our zeros according to middle term splitting are 4 and minus 2. ठीक है बच्चों. अब हम क्या करते हैं? Let us compare the polynomial. ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में. Okay, comparing the polynomial with ax square plus bx plus c. So a is coefficient of x square, which is 1. यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है. Okay, coefficient of x, आप x को अगर हटा देते हैं तो minus 2 बचता है. So a is 1, b is minus 2 और c is minus 8. Okay, you have to take care of the signs. Yes, कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बहुत जरूरी है. नाउ अब हमें क्या करना है? वी आर सपोज टू वेरीफाई. सो लेट्स डू दी वेरिफिकेशन. सो फॉर वेरिफिकेशन व्हाट वी विल डू? We will write verification.
एक तरफ हम कर देते हैं जीरोस और एक तरफ कर देते हैं विद coefficients. Okay, so let's do this. Now zeros में I want to find sum of zero क्या होगा? 4 plus minus 2 which is 4 minus 2 which is equal to 2. And in coefficients, what's the formula? Sum is minus b by a. So minus of minus 2 by 1 which is also minus of minus 2 is 2. So sum verified. Now let us find product. Okay, product would be 4 times minus 2 which is minus 8, and product here as per coefficient is c by a. C is minus 8 by 1 which is minus 8. So this is how we verify. ठीक है बच्चों, so this is the first question, first part. You can pause the video, go through the working once again and do it yourself. Try to do it yourself, don't copy the question. ऑल्सो बच्चों, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए. और एक रिक्वेस्ट है, इफ ईच वन ऑफ यू कैन शेयर द वीडियो विद एटलीस्ट 10 ऑफ योर फ्रेंड्स, इट विल हेल्प अस एंड मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू. ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 1, second one is 4s square minus 4s plus 1. Okay. So जब middle term splitting करनी है, so p is what? 4 into 1 which is 4, but sum is minus 4. Okay. So factors of 4 are 2 and 2. Now see, अगर मैं minus 2 और minus 2 कर दूं तो sum minus 4 होगा. Yes. And minus 2 into minus 2 product 4 होगा. So that means this is the combination. So अब हम क्या करेंगे? We are going to use this and do middle term splitting. So let's do that. So this is 4s square minus 2s plus 1. Now here इन दोनों में 4 and 2 में 2 common है, s square and s में s common है, so 2s common. So 4s square divided by 2s, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ हम क्या कर रहे हैं. We are dividing like this and then minus 2s divided by minus 2s. So and here what will happen? s से s कट गया और इधर आ गया 2s and 2s, this is minus 1. So you get 2s times 2s minus 1. Now when we are doing middle term splitting, understand ब्रैकेट में जो है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए. यानी अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, मुझे यहाँ इनसाइड ब्रैकेट 2s minus 1 चाहिए. सो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी टेकन कॉमन. क्योंकि देखिए माइनस 2s है तो माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट प्लस. सो वी शुड टेक, और 2s एंड 1 में ओनली 1 कॉमन है, सो वी विल टेक minus 1 कॉमन. Okay, so if I take minus 1 common, so what is happening inside? Let us see. Minus 21 divided by minus 1 plus 1 divided by minus 1. So minus 2s divided by minus 1 will become plus 2s. So this is 2s plus 1 divided by minus 1 is this. So अब हमारे को मिल रहा है 2s minus 1 times 2s minus 1. And since we are finding zeros equated to 0, 2s minus 1 equals 0 means 2s equals 1, s equals half. So इसमें भी मुझे वही मिलेगा. So हमारे zeros क्या हैं? दोनों zeros 1 by 2 है. ठीक है. Now let us do the part where we have to compare the coefficients and find the sum and product. So what are we doing? So मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये आपको वहां लिखना पड़ेगा. Comparing the polynomial with ax square plus bx plus 1, ये आपको लिखना पड़ेगा. And then you will write a equals 4, okay, b equals minus 4 and c equals 1. Okay, so c is 1. अब हमारा काम क्या है? Verification. So let us verify. So on one side I will write zeros, on other sides I will do with the help of coefficients. Okay, so when we find sum with zeros, s, so zeros क्या है भाई? Half plus half. Half plus half is 2 by 2 which is 1. Now here sum is minus b by a, so which is minus of minus 4 by 4. Minus and minus is plus, so 4 by 4 which is 1.
So sum is verified. Now let us look at product. So 1 by 2 times 1 by 2 is 1 by 4, while product here is C by A, which is also 1 by 4. So products are also verified. Okay, so this is how we do the question. Now let us move to the third one. Third question is, uh, let me write that down. It says 6x square minus 3 minus 7x. Now students understand the polynomial is always written. First term should be containing x square, second term should be x, and third term should be constant. यहाँ पे they have done constant in the middle. So we have to rewrite this. So what will we do? We will first write it properly. So we will write 6x square minus 7x minus 3. This is very important. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कांस्टेंट बीच में दे दिया है, तो पहले हमको रीअरेंज करना है सो दैट पहली टर्म शुड बी एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म शुड बी ऑफ एक्स एंड थर्ड टर्म कांस्टेंट. अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है. सो P इज व्हाट? P इज 6 टाइम्स माइनस 3 minus 18 and sum is coefficient of x which is minus 7. अब आप 18 का जब फैक्टर्स करेंगे तो 9 एंड 2 जो है वो आपको मिलेगा. ठीक है, सो 9 एंड 2 में मुझे माइनस 7 कैसे मिल सकता है भाई? माइनस 9 प्लस 2 हमको देगा माइनस 7 and minus 9 times 2 gives us minus 18. So this is the right combination which we need. So अब हम इसको use करके we will do middle term splitting. So let's go ahead and solve. So we have 6x square minus 9x plus 2x minus 3. अब हम grouping करेंगे. So 6 and 9, 3 is common. X square and x is common. So now 6x square divided by 3x. 6 divided by 3 is 2. X square divided by x is, now minus, because minus divided by plus is minus. 9 divided by 3 is 3. X divided by x is 1. So 3 into 1, we will keep minus 3. Between 2 and 3, 1 is common and we need 2x minus 3. So we will take plus 1 common. So plus 1, 2x minus 3. So now what are we getting? We are getting 2x minus 3 times 3x plus 1. And since we are finding 0, so we will equate this to 0. So now what will happen? 2x minus 3 equals 0 or 3x plus 1 equals 0. यहाँ से we will get 2x equals 3, x equals 3 by 2. यहाँ हमें मिलेगा 3x equals minus 1, x equals minus 1 by 3. So what are the zeros we have got? 3 by 2 and minus 1 by 3. Okay, so let us keep it and do the second part, which is comparing the coefficients. So comparing with ax square plus bx plus c. A coefficient of x square is 6, b coefficient of x which is minus 7, c constant which is minus 3. Okay, प्लीज रिमेंबर, आपको ध्यान रखना है द साइंस पॉजिटिव और नेगेटिव एंड यू हैव टू कॉपी अकॉर्डिंगली. नाउ अब हमें क्या करना है? हमें करना है वेरीफाई. सो लेट्स डू वेरिफिकेशन. सो व्हेन आई डू वेरिफिकेशंस, अगेन आई एम कीपिंग zeros here and I am keeping coefficients here. So sum would be what? The zeros are 3 by 2 plus minus 1 by 3. So हमको मिल रहा है 3 by 2 minus 1 by 3. LCM is going to be 6. तो इसको मुझे 6 बनाने के लिए 3 से डिनोमिनेटर करना है, तो 3 से न्यूमरेटर भी, एंड हियर आई हैव टू डू विद 2, so do the same with numerator and denominator. That's LCM actually. So 3 into 3 is 9. 9 minus 2 is 7 by 6. So इसको अगर हम solve कर रहे हैं तो I am getting 7 by 6. Okay. Now let us find sum using coefficient. So sum is equal to minus b by a. So minus of minus 7 by 6
which is 7 by 6. So this is verified. Now let us go to product. Product is 3 by 2 times minus 1 by 3. So 3 and 2 and 3 and 3 will cut each other. You get minus 1 by 2. Okay. Now product here is C by A, which is minus 3 by 6, again, which can be written as minus 1 by 2. So verified. Okay. Students, up, I would urge you to pause the video, solve the questions yourself. वो बहुत बहुत important है. आप जब तक you are not solving questions yourself, learning will not be complete. Okay. देखने में आपको आसान लगेगा, but जब unless you are doing, then only you will get the confidence. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ क्वेश्चन की ओर, which is 4u square plus 8u. ठीक है. नाउ इसमें देखिए बिटवीन सिर्फ दो टर्म्स है, कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट जीरो होगा क्योंकि देयर इज यू स्क्वायर, देयर इज यू, कांस्टेंट नहीं है, तो दैट मींस सी इज जीरो हियर. ओके. सो बट पहले हमें फैक्टराइज करना है, तो हमको 4 एंड 8 में 4 कॉमन है, यू स्क्वायर एंड यू में यू कॉमन है. सो 4u square divided by 4u will give us u. 8u divided by 4u will give us this. अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं. सो इक्वल टू 0. सो क्या हमें 4 नहीं चाहिए, सो डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स. सो आपके पास आ गया u इंटू यू प्लस 2 इक्वल 0. इससे क्या मिलेगा, इट मीन्स आइदर u इज 0 और u प्लस 2 इज 0, विच गिव्स अस u इक्वल्स माइनस 2. सो हमारे को जीरोस मिल गए हैं. 1 0 is 0, other 0 is minus 2. Okay. Now let us keep it aside and do the part where we have to compare. So again, I am again repeating, ये आपको पूरी लाइन लिखनी होगी जो मैं बोल रहा हूँ. Comparing the coefficients with ax square plus bx plus c. सो यहाँ वेरिएबल u स्क्वायर है, सो a जो है वो u स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, विच इज 4, b इज 8, देयर इज नो कांस्टेंट, दैट मींस c इज 0. ओके. नाउ लेट अस डू वेरिफिकेशन. सो I have zeros on one side, I have coefficients on other side, and we are verifying. So sum would be 0 plus minus 2, which is 0 minus 2, so which is minus 2. And sum with coefficients is minus b by a, so minus 8 by 4, which is also minus 2. So sum हमारा verify हो गया. Now product is zeros का product, 0 into minus 2, 0 into anything is 0. And here product is c by a, which is 0 by 4, which is also 0. So we have verified the relationship. Okay. अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर. Let us do question 5 of 1, which is we are given t square minus 15. Now यहाँ क्या हो रहा है, देखिए t square minus 15 एंड मुझे 0 फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है मुझे, t square minus 15 equals 0. So you can write t square equals 15. Okay. So अब t क्या होगा, t होगा प्लस या माइनस ऑफ रूट 15. ओके. रूट 15 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट चाहिए, सो वी आर फाइंडिंग रूट 15. एक यू हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स वन थिंग, कि whenever there is even power to a variable, the answer is always plus or minus. Let us understand, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर x square 4 है, तो हम कह सकते हैं कि x could be plus 2 और minus 2. So हम लिखेंगे plus minus 2. Why are we saying this? See, 2 square is 4, so is minus 2 square. So that means both can be the answer. So that's the reason we are doing this. Okay. So t is plus or minus root 15. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे zeros हैं वो क्या हैं, one of the zero is root 15, other zero is negative root 15. So ये zeros हैं. Now let us compare with ax square plus bx plus c. A
is coefficient of the variable with square. So t square का coefficient 1 है. So a is 1. Is there a term containing t? No. तो इसका मतलब क्या हो गया? b is 0 क्योंकि यहाँ t वाली term है ही नहीं. And c is minus 15. Okay. Now let us do verification. So एक तरफ हम रखते हैं zeros और एक तरफ हम रखते हैं let us keep coefficients. So when I find sum, so root 15 minus root 15 will be 0. Or sum here should be minus b by a, which is minus of 0 by 1, which is 0. Now when it comes to product of the zeros is root 15 into minus root 15. Okay, plus and minus is minus, and root 15 into root 15 is 15. So we get minus 15. Product here is c by a, which is minus 15 by 1, which is minus 15. So again, we have verified the relationship between zeros and the coefficients. Okay, students. Now, let us go to the last question of one main. Question number 6. हमको दिया गया है 3x square minus x minus 4. So what would be product here, students? 3 into minus 4, which is minus 12. In fact, minus 4 plus 3 will give me minus 1, जो कि sum है, minus 1. So हमारे को direct ही मिल गया, minus 4 plus 3 is the combination. So let us write that down. So we have 3x square minus 4x plus 3x minus 4. अब इन दोनों में x कॉमन है, so take x common. So you get 3x minus 4. And यहाँ 1 is common, so take 1 common and you get 3x minus 4. So we take 3x minus 4 common and then x plus 1. Since we are finding zeros, that means this is equal to 0. So either 3x minus 4 is 0, which will give us what? 3x equals 4 and x equals 4 by 3. And if x plus 1 is 0, it gives me x equals minus 1. So हमारे को zeros मिल गए 4 by 3 and minus 1. Our zeros are 4 by 3 and minus 1. Let us keep this aside and find the coefficients by doing what? By comparing with ax square plus bx plus c. So a is 3, b is, देखिए ये minus x है, so that means minus 1. So b is minus 1 and c is minus 4. Okay, now let us do the verification part. So on one side we will do zeros and other side we will do coefficients. So sum is sum of zeros, which is 4 by 3 plus minus 1. So which would be minus 1. Now we have to do LCM. So do into 3 here, into 3 here. 4 minus 3 is 1 by 3. अब यहाँ देखना है sum क्या होगा. It is minus b by a. Let's do that. Minus of minus 1 by 3, which is also 1 by 3. Minus into minus is this. So sum is verified. Now let us find product of zeros. So which is 4 by 3 times minus 1, which is minus 4 by 3. Product here is c by a in the coefficients, which is minus 4 by 3. So this is how we do these kind of questions. Okay. Now let us look at the second question. Before that, we will simply understand one simple theorem. Okay. The See here, अभी तक हमने zeros find किए. We are finding the zeros. But what if we are given the zeros? So if zeros are known, यानी हमको दिया गया है zeros, तो हम उस एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा. ठीक है? So then how to find quadratic polynomial? तो quadratic polynomial होता है x square minus sx plus p. यहाँ पे s क्या है? Sum of zeros and p है product of zeros. Okay.
समटाइम्स इन दी क्वेश्चन दे गिव दी सम एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली, तो वहां हमें s की जगह सम डाल देना है, p की जगह प्रोडक्ट डाल देना है, एंड वी विल गेट द पॉलिनोमियल। एंड दैट वुड बी योर, सी जनरली ये आपका एमसीक्यू होगा, 1 मार्कर, ठीक है। सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस। सो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपने, s है सम और p है प्रोडक्ट। सो मैं इसको मिनिमाइज करके साइड में रख देते हैं एंड लेट अस सॉल्व क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। सो पहले क्वेश्चन में सम तो दिया हुआ है 1/4, प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। सो व्हाट वुड बी द पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस है 1/4, सो -1/4x प्लस p। नाउ p है -1, so plus into minus is a minus. Now we cannot keep the polynomial as fraction with any of the term, so we will do LCM. So आप क्या करिए, upon 1 here we need to multiply with 4, okay, यहाँ पे भी multiply with 4. So now what are we getting, in the numerator we are getting 4x square minus 1x minus 4 divided by 4. अब हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को बाहर ले जाते हैं and we write 4x square minus x minus 4. So the polynomial is, जो हमको पॉलिनोमियल मिलेगा इन एमसीक्यू में आपको सिर्फ सीधा यही दिया जाएगा। सो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज द पॉलिनोमियल। ये डिनोमिनेटर हमने कॉमन ले लिया और उसको हम बाहर रख देंगे, ठीक है। नाउ लेट अस डू द सेकेंड क्वेश्चन। इट्स वेरी सिंपल, सो वी विल डू इट क्विकली। सेकेंड क्वेश्चन में s is √2 and product is 1/3. So x square minus √2x plus 1/3, ठीक है, यही हमने देखना है। s की जगह √2 रखा, p की जगह 1/3। अगेन यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में है, तो अपॉन 1 करिए, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो अब हमारे को पॉलिनोमियल क्या मिला, 3x स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 1, ओके। और जो 1/3 है उसको मैं आउट करके फिर हटा भी सकता हूँ। सो पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, वो भी लिखना जरूरी है, 3√2x प्लस 1, ओके। नाउ लेट अस गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमको सम जो है 0 दिया हुआ है, सम इज 0, प्रोडक्ट इज √5। सो अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 0x plus √5. So 0 into anything is 0. So the polynomial is simply x square plus √5 and that is your answer. Okay. Now students, next question है, sum भी 1 है, product भी 1 है, s is 1, p is 1. Okay. Simple है, x square minus 1x plus 1. Okay. अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है s is -1/4, p is 1/4. So x square, now minus of -1/4x, देखिए s जो है -1/4 है एंड प्लस p। अब देखिए माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो वी गेट x स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। अगेन देयर इज अ फ्रैक्शन, सो लेट अस डू LCM. So क्या होगा, the polynomial would be 4x square plus x plus 1, ठीक है। This 1/4 is taken as common and then removed because we don't need, we just need the polynomial. So this is how we do these kind of questions. Let us do the, I think, last part. Yeah, 4 and 1. So sum is 4 and product is 1. So students, the answer is very simple, x square minus 4x plus 1, ठीक है। So again students, watch the video again, maybe you can watch it at a slow speed, pause it, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस को do yourself, अपने आप से करिए। if you get stuck, then see the working again. That is the way you will learn with confidence, ठीक है। Again, while ending the video, I would request you to share the video with your friends, at least 10 of your friends,
which will keep us motivated to make more videos for you. Like the video, subscribe to the channel if you are not subscribed, press the bell icon. Thank you for watching the video.